Assalamu alaikum to you all. It is drawing first class for class 6 and I am here, Rahila Kamar, your drawing teacher. So welcome you all. I hope you all are fine and staying home safe. And today we are going to start our lecture. First drawing class, and we are going to start the diagram of first one, that is animal cell. See the contents. It's class 6 content, course contents of drawing. First is animal cell, nerve cell, then number 3 is human eye, 4 is human ear, tongue. We will draw the structure of tongue. Then plant cell, palisade cell, onion cell, root hair cell, xylem vessel, phloem vessel, and at the last the map of Pakistan. So today we are going to start the first diagram of our lecture, the animal cell. See the picture of animal cell. First see the shape. The shape of the animal cell is not perfectly round, not perfectly capsule shape, oval shape नहीं है बिल्कुल भी. It's just like potatoes. You see potatoes, they all are potatoes, but every potato is different from other. Their shape is not perfect or not fixed. So we are going to start the diagram. For the drawing we need some things that you must have with you. That is a ruler, a pencil, eraser, a sharpener, and for the shading we need also the pencil, marker, blue marker for the heading, black marker for the outlining of the science diagram that we are going to draw the diagram. Next is the black pointer. Black pointer is for the labeling in class 6. We don't have a drawing book, we just have a drawing copy. So remember, there is no any drawing book that you have, okay? And in the corner you see there is the tissue. I will tell you that why we need this tissue. ठीक है. So ये सारा हमारा apparatus है that you must have with you. ये सारा सामान आपके पास होना चाहिए. So I am going to start the diagram. First I will ready the page. So how I will ready the page, see. First I will draw the margin lines. Draw the margin lines neat and tidy and straight. It gives a perfect look to your page, to your work, to the diagram. जो भी डायग्राम आप बनाते हैं, अगर उसकी मार्जिन लाइंस आप अच्छी लगाएंगे, प्यारी लगाएंगे, तो उसकी पेज को एक अच्छी सी लुक मिल जाती है, जिससे पेज बहुत टाइडी नज़र आता है, अनटाइडी नहीं होता. अगर मार्जिन लाइंस आपकी अच्छी ना लगी हो तो आपका पेज की जो लुक होती है वो अनटाइडी हो जाती है. And the next thing is the pencil. Must keep a sharp pencil you for the drawing. Whenever you are going to draw something, either in drawing, in science or in maths, you also draw different figures, so keep the pencil sharp, because sharp pencil से क्या होता है कि आपकी डायग्राम बहुत नीट एंड टाइडी आती है, बहुत अच्छी लगती है. और जब आप डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो इमेज है, जो आपकी डायग्राम है, वो ज़्यादा अनटाइडी हो जाती है. तो सी पेज लुक देखें, सारी मार्जिन लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, पेज जो है बहुत नीट लग रहा है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सी द शेप. जैसे मैंने शेप बताई, नॉट परफेक्ट राउंड, नॉट ओवल शेप, बिल्कुल गोल नहीं होती, बिल्कुल ओवल शेप नहीं होती. So I will tell you can draw any shape, shapeless. Animal cell are shapeless, you can say. आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल जो वो क्या है, शेपलेस होता है. फिर हमें ड्राइंग के पेज में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हेडिंग लाइन. So I need a ruler,
and a pencil to draw the line. So I am going to draw a line for the heading. हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी विद ब्लू मार्कर. अब देखें हेडिंग के लिए जब मैं इस लाइन पे तो मैं हेडिंग कर दूँगी. ओके, वन लाइन आई विल ड्रॉ एक्स्ट्रा. दिस एक्स्ट्रा लाइन कीप माई लेटर्स इक्वल साइज. इस लाइन से क्या होगा, मेरे लेटर्स का जो साइज़ होगा वो स्ट्रेट आएगा, एक सा आएगा. लेटर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके साइज़ में. नाउ आई विल यूज़ ब्लू मार्कर for the heading of science number 1 diagram, that is animal cell. So heading is done. So what I will do with the extra line, I will rub it lightly. सी मैंने ड्रॉ की थी, ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करनी ताकि आप एट द एंड इसको इरेज कर लें. नाउ फॉर द yes we will do separation for what? Separation for diagram and for the labeling. भी हमने करनी है, तो लेबलिंग के लिए मुझे साइड पे एक पोर्शन चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जेंटली फोल्ड द पेज दैट कीप माई पेज इन 2 पार्ट्स. जिससे मेरे पेज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे. वन इज़ स्मॉलर एंड वन इज़ बिगर. द बिगर साइड ऑफ द पेपर इज़ फॉर drawing diagram, and the small side is for the labeling. So I will start the drawing of animal cell. Look, the shape is done. The next, so see, the next is what? The next is to draw the nucleus. Nucleus is the central part of the cell. ठीक है, we will draw other organelles also. और भी parts बनेंगे इस animal cell के. How we keep the difference between these parts, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको different बनाने के लिए I will draw a check like structure in the nucleus. See, मैंने क्या किया कि चेक बना लिया स्ट्रक्चर किसमें, न्यूक्लियस में. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वैक्यूल्स. एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल्स. दे आर नॉट एंड फिक्स नंबर. इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 2 4 6. ये अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है, तादाद में ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. इट्स ओवल शेप स्ट्रक्चर. ओवल बनाकर कैप्सूल शेप, और इसके अंदर आप इस तरह से लाइंस लगा दें तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर स्टेशन ऑफ सेल. सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, जो उसको कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है. नेक्स्ट में इसके साइटोप्लाज्म में, जो सारा साइटोप्लाज्म है इन सब में डॉट्स लगाई हूँ. दिस डॉट्स आर राइबोसोम. ये राइबोसोम्स हैं. ठीक है, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल. Next, my diagram is finished, so I will start the outlining. I need the black marker for outlining the diagram. So keep the marker in straight and your hand, अपने हाथ को बिल्कुल स्मूथ रखें ताकि आपकी आउटलाइन जो है वो नीट एंड टाइडी आए. All the outside and inside the parts of the cell will be outlined with black marker. Now the ovals, the vacuole will be outlined, and at the last the ribosomes.
After completing outline, I will start the shading. हल्का सा इसके ऊपर मैं इरेज़र को रब कर रही हूँ कि जो लाइंस हैं पेंसिल की शो हो रही हैं वो थोड़ी सी हाइड हो जाए, गायब हो जाए, उनको इरेज कर दें। ओके, फॉर द शेडिंग आई नीड पेंसिल। इट्स सिंपल HB पेंसिल, ये आपको कहीं से मिल सकती है। आप सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं शेडिंग के लिए। सिंपल पेंसिल और शेडिंग वाली पेंसिल में से इतना सा डिफरेंस है कि शेडिंग पेंसिल जो होती है इसका जो सिक्का है ये डार्क होता है ब्लैक कलर में, और जो आम पेंसिल हम यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग उसका सिक्का जो है वो ग्रेश कलर का होता है थोड़ा सा। सो स्टार्ट द शेडिंग। इट्स लाइट शेड। सारी डायग्राम को फुल आपने लाइट शेड करना है। सी, it's done almost. All the cell is shaded lightly. If you are not able to shade without ruler smoothly, you can use a ruler. With the help of ruler, आप क्या कर सकती हैं कि शेडिंग को रूलर की मदद से भी ऐसे आप सेट कर सकती हैं अपने लिए, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि आपकी शेडिंग जो है वो किसी साइड से थोड़ी सी बाहर आ गई है, आप उसको भी वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, आई एम गोइंग टू यूज़ द टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी हाउ टू यूज़ और वाई वी यूज़ टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉटन भी यूज़ कर सकती हैं, कपड़े का एक छोटा सा पीस भी यूज़ कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ। इसको जेंटली आप देखें इस शेडिंग के ऊपर रब करें। इससे क्या होता है कि हमारी जो शेडिंग होती है वो स्मूथ हो जाती है। ये देखें, जहाँ जहाँ मैं टिश्यू पेपर को इसके ऊपर स्मूथली रब कर रही हूँ वहाँ क्या है, शेडिंग जो है वो देखें स्मूथ है। और नीचे देखें, यहाँ मैंने अभी रब नहीं किया तो ये रफ है। ठीक है, मैं इसको भी स्मूथ कर लूँगी शेडिंग को। ये देखें, अब मैंने पूरी डायग्राम को जो है वो स्मूथ कर लिया है। उसकी लाइट शेडिंग है वो स्मूथ हो गई है। अब अगर मुझे लगता है कि मेरी शेडिंग कहीं से बाहर निकल आई है डायग्राम से, तो मैं उसको नीट कर लेती हूँ। और तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शेडिंग बाहर ना आए, क्योंकि जब शेडिंग बाहर आती है तो क्या होता है कि बहुत अनटाइडी सी हो जाती है, पेज जो है वो बहुत रफ हो जाता है, जिसकी वजह से डायग्राम जो है वो बहुत अनटाइडी लुक देती है। अब मैं डार्क शेड अप्लाई करूँगी। डार्क शेड हम करेंगे न्यूक्लियस में। डार्क शेड के ऊपर आपने टिश्यू पेपर नहीं रब करना, क्योंकि टिश्यू पेपर के रब करने से क्या होगा, ये डार्क शेड जो है सारा लाइट शेड के साथ मर्ज हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, और पता ही नहीं चलेगा कि डार्क शेड कहाँ है, लाइट शेड कहाँ है। यहाँ कलर से यूज़ कर नहीं रहे, तो शेडिंग से क्या होता है कि शेडिंग एक ही टोन में हो, उसमें लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ना हो, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो make your diagram attractive, have to use light and dark shade. So I am doing the shading in vacuole. The vacuoles are dark shaded, as the nucleus is also dark shaded. Next is the mitochondria. I will shade the mitochondria also dark. Dark shade होगा mitochondria में भी, as I am doing. Now all the organelles are done in the animal cell. Next is the sides. जो इसकी sides हैं इसको भी हम हल्का सा डार्क शेड दे देंगे, ताकि इसकी लुक जो है वो और भी नीट एंड टाइडी हो जाए।
एज यू आर डूइंग विद योर क्लॉथ, अक्सर आप देखें आप कपड़े सिलवाती हैं, उनमें आप पाइपिंग करवाती हैं और लेस वगैरह लगवाती हैं डिफरेंट कलर्स के, कंट्रास्ट कलर्स के, ताकि उसकी क्या हो, लुक निकल आए, वो अच्छा लगे। इसी तरह हम इस डायग्राम की साइड्स को भी डार्क टोन दे रहे हैं ताकि इसकी भी थोड़ी सी लुक जो है वो निकल आए और ये अच्छा लगे। ऑल द साइड्स विल बी डार्क शेडेड as I am doing, you can see. The sides are almost done. ज़्यादातर हो गई है। A little bit is left. And it's done. Now the shading is completed. See, next one is the labeling. For the labeling I need a pointer, as I told you to keep a pointer with you, a black pointer for the labeling. See, pointer and a ruler to draw the arrows first. In the labeling the arrows are must. अक्सर बच्चे लेबलिंग कर लेते हैं और उसके साथ एरोज नहीं लगाते, तो क्या होता है कि फिर वो समझ नहीं आती ना कि लेबलिंग किस चीज़ को लेबल किया हुआ है. वी हैव टू bring the line from the organ that you are going to label. It's the second one is vacuole. The first one was the cell membrane. The third one is the nucleus. तो मैं देखें न्यूक्लियस से लाइन लेकर आई हूँ, एरोस के आगे मैंने बनाया है. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. ये सारे एरोस जो हैं मैं इस फोल्डिंग की लाइन पे लेकर आ रही हूँ ताकि सारी जो लेबलिंग है वो मेरी स्मूथ आए, अच्छी लगे, नीट आए. एंड द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिल्ड इन द सेल. सेल में पूरा जो एक लिक्विड टाइप चीज़ होती है दैट इज साइटोप्लाज्म. अब हर एरो के आगे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फॉरवर्ड फॉर द राइटिंग ऑफ लेबलिंग. जो लेबलिंग है वो लिखने के लिए आपने लाइन ड्रॉ करनी. यू कैन आल्सो ड्रॉ विद पेंसिल. आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकती हैं अगर आप नहीं ड्रॉ कर रही हैं. It's done. Okay, now I will start writing. The first one is cell membrane. In animal cell there is no cell wall, it's cell membrane. membrane. Okay, next is vacuole. The third one is nucleus, nucleus. Next is ribosomes. Next is mitochondria. You can also write mitochondria. Both are correct. Mitochondria. RION, RIA. Both are correct. And the last one is cytoplasm. ठीक है, it's done. See the labeling. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जो थी वो रह गई थी. So completed. Don't cross the margin lines for the labeling. आप labeling जब भी करें आपने margin lines को cross नहीं करना. See the heading, the shading, the diagram and the labeling is done. Completed. See the whole page. It's look neat, tidy, and it's look good. Shading is smooth. Labeling is almost good. Equal size of the letters. Don't use markers. What happened with the markers? That markers keep the outline untidy. So what is your homework?
For class 6, today's drawing homework is to do the practice of animal cell in rough copy. You must have to do the shading and labeling. जिस सिर्फ डायग्राम नहीं बनानी आपने उसके साथ उसकी शेडिंग एंड लेबलिंग भी करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने फिनिश करना है एंड आल्सो लर्न द लेबलिंग्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.